Well, I mean, many thanks for the very kind introduction, but you missed out the very basic part and the most critical part, why I have been invited over here. I have done CA, CFA, blah, blah, वो सब से इनको कोई interest नहीं है, बराबर? To be very honest, one of the key things which I bring on the table today is that I have experience of connecting with young professionals like yourselves over the past many years. Very often, these kind of things are very difficult to implement. I can be very good at my work, I can be very good at managing money, but if I am not good at transmitting that in small bite-sized, implementable, actionable things for you guys, तो क्या फ़ायदा हो गया? एक घंटा आके मैं बर्बाद करके चला गया, आप लोग भूल गए, ओके थैंक यू मैडम, थैंक यू सर, चाय पी लो, घर पे चले जाओ, मैटर ओवर, क्या फ़ायदा होगा, करेक्ट? So thank you for the kind introduction. I gave my introduction, what I bring on the table, what I want to be known as in this room. Thank you, sir. You gave a very good introduction. Sangeeta ma'am, you gave an outline. I was getting very tensed when I was sitting here. मैं पीछे भागा, आप लोग किसी नोटिस किया जाएगा तो. I had made a small deck thinking that I'm speaking to a fresh, qualified finance professionals who are eager and hungry to know about capital markets, about finance. बोले बहुत टेंशन है, आधे लोग इधर फोर्सिबली आए हैं, कुछ लोग मार्केटिंग के लोग हैं. तो I quickly went and added 2 slides at the back of my presentation connecting to marketing. जरूरी है ना साहब, ने तो जैसे मैम ने बताया आधे लोग इधर वो कर रहे हैं, वो बोले सब ट्रेडिंग कम्युनिटी के बाजार चालू हो गया है बॉस, क्या ले रहा हूँ क्या बेच रहा हूँ, F&O चालू है मेरा, अरे भाई वाईफाई बंद कराओ भाई रूम का बॉस 1 घंटे के लिए. सो ट्रस्ट मी व्हेन आई से आई हैव कार्व्ड आउट large amounts of my time to create this session. I am contributing my market hours today. For you also it's important, for me equally, right? I am managing a book of 1,50,000 crores of 50 lakh investors. I am here today during market hours to talk to you. But I have gone out and made this. Why I am telling you? Not just कि हाँ भी आप ज़्यादा इंटरेस्ट लो, मुझे क्या पड़ी, आपको इंटरेस्ट नहीं लेना मत लो बस, कल से आप आपके कॉलेज में, मैं मेरे धंधे में, मुझे क्या करना है. But to highlight how to be alert, how to adapt to the requirement, how to adapt, leave aside this is a college. Assume for me it's a business deal. मालूम पड़ा बिजनेस डील के 2 मिनट पहले कि कुछ अलग चाहिए बॉस, नहीं तो धंधा होगा नहीं तुम्हारा. या आप जॉब इंटरव्यू में बैठे हो, बोले कि जॉब इंटरव्यू में सब लोग बोल रहे हैं किसी ने भी ब्लैक टाई पहनी है, आउट. तो क्या करोगे आप? कहीं से भी फोन करो, वैन यूसेन में जाओ, इधर जाओ, रास्ते पे से जाओ, टाई को डाई कराओ, बट टाई का ब्लैक कलर चाहिए नहीं. जितने लोग का ब्लैक टाई, हाथ ऊपर करो. क्या करोगे आप? Something you have to do, be alert, be on the face. I ran up, added one thing in my mind. I started thinking how I will connect that to make sure you are involved. Okay, that was just a small thing and my introduction. Otherwise, this was a very kind introduction and very flattering introduction. Thank you for that. Okay, this is up over here. I'll try to highlight this in very basic thing. एक वो clicker देते ना बहुत सारा. So, in summary, today what I'm going to try and discuss, of course, we'll talk about capital markets, how we look at, thank you, how we look at equities. I try to make it in a small, light way. Many of you who are, some of the friends I've met, they say, sir, I've met you before, I have heard you before, I read your work on LinkedIn. So you might have heard of this, what I have developed over the year. I call it coffee framework. How to analyze capital markets in a very sweet and nice way, which can give you a good grip of what's actually happening in the markets. Second part of my thing, I put it in yellow color. The topic which is given to me, how to identify promising sectors. Okay, fine, agreed. You guys will want to know about that. But net, you are all, most of us are year 1 students, right? Anybody from here is year 2 student? 1 or 2? तो आप लोग का प्लेसमेंट हो गया रहेगा, सब पीपीओ आ गया, प्लेसमेंट हो गया, तो आपको इसमें इंटरेस्ट कम है. बट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर इंटरेस्टेड इन दिस पार्ट. अरे साहब आप बोल दिए, चलो ठीक है, ज्ञान मिल गया, बट मुझे तो अभी भागना है बॉस. मेरा प्लेसमेंट का चालू होने वाला नेक्स्ट ईयर से, मेरा इंटर्नशिप का प्लेसमेंट हो, पीपीओ मिलेगा कि नहीं. तो आई हैव कार्व्ड आउट स्मॉल सेक्शन टुवर्ड्स द एंड बिफोर द मार्केटिंग स्लाइड्स आई इंसर्टेड अबाउट career aspect, that if I am talking about capital markets, if I am talking about asset management, the industry I belong to, what are the career opportunities or what you can do to build a good career over there. So I hope you will find that part also interesting and useful. What I mean by coffee, very simple, it was just a thing I coined. How to look at the equity markets. The CO stands for corporate earnings.
net what are we buying any stock for? Everybody understands basic concepts of finance and economics and joint stock ownership, right? There is a company, that company is making money or making profits. I want to be a owner of that company, correct? When I buy equity share, simple, basic. So for me, what is important कि वो company धंधा कैसे करे, पैसा क्या कमा रहे, corporate earnings, that is my key thing, correct? Everybody understand little bit Hindi? Yes, no, hello? Yes? हाँ, तो मेरा थोड़ा स्टाइल है, कभी इंग्लिश कभी हिंदी, बॉम्बे बेस्ड हूँ, लड़का लोकल, तो गुजराती भी बोल देता हूँ, बट आई नो आई विल नॉट स्पीक गुजराती मच बिकॉज समटाइम्स इट गेट्स आउटसाइड ऑफ द सिलेबस, सो आई विल स्पीक इन लिटिल हिंदी, लिटिल इंग्लिश, हिंदी. सो कॉर्पोरेट अर्निंग, कंपनी में पैसा डाला, धंधा कैसे हो रहा है, उसका कमाने को क्या मिल रहा है मुझे. एवरीबडी विद मी? नेक्स्ट पार्ट, फ्लोज. Madam mentioned very nice thing that most of us are doing trading. Trading means different things for different people. You know, for me it's a different thing. I have a trading desk. Their job is to execute my trades, which I give to them. For some of you, trading means day trading. For some other, trading means a risk-free strategy where they cannot lose money, but they will just make money depending on the capital they bring on the table and how much money they can put on the table. Right? Everybody with me? All of this results into flows in the market. अर्निंग्स कमाना है आपको, कॉर्पोरेट अर्निंग्स लेना है, और फिर फ्लोज कैसे हो रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है अपने को ट्रैक करने के लिए. तो सेकंड पार्ट इज फ्लोज एंड थर्ड पार्ट इज इवेंट रिस्क. अनिल भाई आप आ जाना 9 बजे. कभी काव्या मैडम किधर है? हाँ, आप मैडम टेंशन में 9 बजे के बाद, सर किधर है आप? मैं आ रहा हूँ मैडम. बोले लोकेशन पता है ना? मैं हाँ पता है, मैं बहुत साल से इधर लोकल बॉय हूँ, सिमश्री में तो 25 बार आया हूँ, आपके कॉलेज के बाजू में ना. सर मुझे पता नहीं एग्जैक्टली, मेरे इवेंट रिस्क हो रहा था. मतलब मैं कोई अलग सोच की जगह पे तो नहीं आऊँगा ना बॉस. सो इन वॉट एवर वी डू, वॉट एवर द बेस्ट वे यू हैव आइडेंटिफाई द कंपनी विद द गुड अर्निंग्स, गुड फ्लोज, certain event risks are always very crucial to keep in mind. So I will focus on these 3 aspects during my session. Many people will still feel little bit out of the syllabus and bored, कह रहे बॉस मैं मार्केटिंग की लड़की हूँ यार, अनिल भाई क्या बोल रहे, मजा नहीं आ रहा है. तो थोड़ा रुकना, उसका भी आएगा. About this also, as I am going through, if any questions come to mind, please keep it written down, or if you have some mechanism to collect it, I will try and respond to all of them gradually. Right now, I will focus on these 3 things and share a basic framework, if not today, later on, how to look at equity markets. Okay? Everybody with me? Yes? हाँ? सुबह का टाइम है बॉस, अच्छा हो मेरे को सुबह का सेशन मिला है, थोड़ा चैलेंजिंग हो गया मुझे पता है, पर थोड़ा एनर्जी रखो तो आपको भी मजा आएगा, मुझे भी मजा आएगा. ठीक है? Corporate earnings, if you look at it in very simple way, some of the people who are investing in capital markets, maybe you are investing in some mid small cap stocks. Anybody invested in Yes Bank? हो सकता है ना? One of the, why I'm asking that, nothing, I don't talk about stocks or stock specific, but just recently we are doing a report and it was out in public domain. It is the company which has the highest number of retail shareholders. इसके लिए पूछ लिया कि भाई किसी ने ट्रेडिंग के लिए कुछ डाल दिया हो पैसा जैसा वैसा. So if we look at on a top level as an overall economy and as an overall, let's say, indicator of the market, we look at pretty much Nifty 50, you know, overall barometer of the country's capital markets. Nifty 50 earnings to get started with. Why I picked up October? मेरा हैप्पी बर्थडे अक्टूबर में नहीं आता, उसके लिए नहीं डाला. October 2021 was the last time markets were at all-time highs. Anybody remembers? Many of you were not in, you were in school maybe, or many of you have already experienced, you were working in some other field, but you might have read about or heard about October 2021. बराबर ना सर? That time equity markets Nifty 50 was around 18,500, 18,900 levels. After that market were almost sideways till about recently when it crossed the all-time high. So I'm comparing the 2 period का corporate earnings, basic earnings of Nifty 50. So if you look at it, the way in which the earnings have grown, the Nifty earning was about 650 EPS, earnings per share. That has grown to about 950. So it's a good growth, approximately 40% jump in this period. Now during that time, Nifty 50 or broader equity market didn't do much, except recently it has gone up. So sometimes if you feel, अरे बॉस बाजार में बहुत तेजी हो गई बॉस, अभी डर लगता है, मुझे टेंशन हो रहा है. हाँ मुझे भी होता है. अपन खरीद क्यों रहे हैं? To be a part of the company's earnings, profitability of the company, because I am a joint owner of the company. Everybody with me? तो ये देखना बहुत जरूरी है कि बॉस जो माल ले रहा हूं मैं उसमें पैसा कितना आने वाला है.
अर्निंग्स तो ग्रो हुआ है 40% से. नाउ एट करंट लेवल एवरीबडी नोज द लेवल्स. तो अभी बाजार क्या खुला है भाई, किसका चालू है फोन तो बता दो भाई. Nifty around 22,000 broadly, plus minus a little bit. I have not seen today. My phone was already off by the time I entered here. So at about 22,000 now, with this all-time high, we are about 23 times the PE of the broad market. चलो ये 40% increase. Some people say post-COVID, revenge spending, companies were doing exceptionally well. Maybe it will not continue ongoing. Agree. Broadly speaking, let's say 12% growth of broad corporate earnings. So over the next 2 years, if we look at the Nifty earnings at 12% compounding, we'll come to around 1200 Nifty earnings level. At that level, my today's Nifty of 22,000 is only 18 times. Everybody familiar with the concept of PE ratio? Marketing वाले बच्चे लोग कितने हैं इधर? बस बहुत कम है ना, तो चलेगा. जरा मेरे को रिलीफ हुआ, चलो थोड़ा पानी पी लेता हूँ बीच में. So everybody relates to PE ratio, right? In simple terms, to make good 22,000 rupees, if I am putting every year I am getting 1200 rupees, so 18 years mein, if the same cycle continues, I will make my money back. So important to highlight that how corporate earnings should be looked at, how you should be able to forecast the growth of the corporate earnings, be realistic in that, and then use your valuation matrix. Later on, I'll show one more data point about how this we are looking at broad market, Nifty 50, but within that other segment of the market, mid caps, small caps, how those have been doing and what is the number relating to that. We'll come to that in some time. If I look at flows part, I'm taking one step behind to give the background of the flows. We'll rewind a little bit to the unfortunate part of the pandemic crisis. March 2020, suddenly lockdown announced, pandemic is there, correct? Everybody faced it in different forms of hardship. If you compare that with the previous crisis which we had seen, that was the GFC, Global Financial Crisis, 2008-2009. Many of you might be aware of it, you must have read it in case studies, etc. I try to identify key difference looking at and wearing the hat of an economics person. Macroeconomics, if you look at fiscal, monetary, top down, okay? During the GFC, Global Financial Crisis, the key thing was that it originated in the financial sector. That translated to the real world. People were losing jobs, people losing comfort on the banking system. Because of that, spending was getting reduced. So, demand was falling down. Supply था, हर एक चीज का आपको supply था. But people losing jobs, they were not feeling comfortable to spend money. So, demand was reducing. Suppose on the other way, if you look at the pandemic crisis, it originated in the real world. Everything stopped, supply chain stopped. I wanted to go for a vacation, but flights were shut. I wanted to go to a movie theater, spend money. I wanted to go shopping, buy my new tie. Black tie चलेगी नहीं. But जा नहीं पा रहा था, mall बंद थे. Correct? Everybody. Demand was there. Supply बंद हो गई थी. Understanding the difference between these two crises. So, to respond to those crises, different approach had to be taken. In GFC, only central banks who do monetary policy, they got involved. अरे बहुत जल्दी से लोगों का बैंकिंग सिस्टम में ट्रस्ट नहीं है. आई एम स्टेपिंग इन, आई एम सेंट्रल बैंक, आई एम फेडरल रिजर्व, आई एम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. पीपल स्टार्टेड गेटिंग कंफर्ट, मनी स्टार्टेड फ्लोइंग, जॉब स्टार्टेड कमिंग बैक, डिमांड इज राइजिंग. सप्लाई तो था ही ऑलरेडी पहले से. सप्लाई भी केम बैक, कंफर्टेबल जोन. सो ओनली मॉनेटरी स्टिमुलस वर्कड. नाउ ओवर हियर, only monetary was not going to work. In the real economy, it was huge impact. So monetary was working. On the other side, fiscal stimulus was working. Fiscal stimulus, everybody relates to it, right? What the central government does, not central banks. So to fight the pandemic, both central banks and central governments started doing joint efforts and trying to make sure that there is a supply chain which is getting fixed, due to which my demand is picking up back. Everybody relates to that. So there was a dual engine of monetary stimulus as well as fiscal stimulus which was working, and that led to a lot of money being pushed into the system. One is you are getting easy money from monetary stimulus. Second is fiscal stimulus. Government is doing a lot of things, reducing taxes, doing government spending, that is creating more capital in the system. Now money has to find its way somewhere.
money finds its way to risk assets also, which includes capital markets and equities. So a lot of the flows that today we are seeing, to understand the color of that flow and the velocity of that flow, we need to go a little bit behind to see the rationale of how that flow started. Just I'm trying to highlight. Everybody with me? Why I said fiscal is important and how it is helping. Economics, everybody understands basic, right? GDP of the country अपन बोले तो formula क्या है GDP का मतलब है ना कि भाई anybody familiar with formula C plus I plus G plus X minus M or whichever way you nowadays learn it, but originally हम लोग ये सीखे थे. तो C is your consumption, I is your investment, G is your government spending, correct? X minus M is net of export minus import, correct? Everybody familiar related to? तो G part जो है government spending, that is your fiscal stimulus, one part of fiscal stimulus. Government is pushing more spending, GDP is little bit increasing. Government is building more roads, cement companies getting job, cement employees are getting jobs, local contractors are getting jobs, steel industry is growing. Those people are then going out and buying more stuff, right? It gives a spur to the economy. So that fiscal and monetary stimulus has some limitation. Gradual way, people will start cutting down that stimulus. People started increasing interest rates. Fiscal stimulus will slowly reduce. So those are the challenges one has to deal with. With that context, the third part of the coffee, that is the E or the event risk. I'll try to highlight some of the inputs, also suggest some reading outside of this. There is a very good book called The Black Swan. Anybody's read it? Put your hand up. कभी पढ़ा नहीं है ब्लैक स्वान? सुना है कि नहीं ब्लैक स्वान के बारे में? सुना है? अरे साहब क्या बोल रहे हो? स्वान तो व्हाइट होता है, ब्लैक कभी देखा ही नहीं. किसी ने देखा है ब्लैक स्वान रियल में? नहीं ना, होता नहीं है ना. स्वान तो व्हाइट है, स्वान समझते हो मतलब? ये तो ऐसी फोटो है, दोनों देखो, ब्लैक भी है व्हाइट भी है. रोज सुबह वॉक पे जाता हूँ मैं, बाजू में एक वो पाउंड है, बॉम्बे में नहीं है, कहीं छोटे शहर में बोले तो, वहाँ पे स्वान घूमते हैं, मैं उसको खाना खिलाता हूँ, घर पे आता हूँ, एक्सरसाइज करके फिर ऑफिस जाता हूँ. एक दिन चलते चलते ब्लैक कलर का स्वान दिखा, अरे बॉस मेरा दुनिया चेंज हो गया. Are you relating to that? So it's a very good book written by Nicholas Taleb. I urge you later on to read it or read some blog around it. It will be very useful if it's not already part of your suggested readings. So something which is very highly unexpected, improbable. Swan was white होता है, black कहाँ से आ गया? But it can happen. These kind of events are defined as black swan events. You didn't think of it ever, but when it happens, it has a catastrophic effect on your portfolio or on your life. लोगों के पास मोबाइल सच्ची में बाहर रख दिया लगता है. नहीं, नोट डाउन करो पेन से पेपर से, ब्लैक स्वान बुक पढ़ना है मुझे घर पे जाके. आज नहीं, नेक्स्ट वीक में, अगले महीने कभी भी, बिफोर आई गो फॉर माई कैंपस प्लेसमेंट्स. तभी किसी जो जेडी नहीं सॉरी FGD या क्या बोलते हैं, ग्रुप डिस्कशन में बात करने को मिलेगा, अच्छा चांस मिले. हाँ साहब मैंने सुना है ब्लैक स्वान के बारे में और ये एक एंगल डालता हूं मैं. When this kind of thing happens, to prepare for these events is very difficult. How many of you feel like before I gave the example of 2020 March pandemic crisis, how many of you feel that was a black swan event? Raise your hand. बराबर सोचा ही नहीं था कभी पैंडेमिक ऐसा हो सकता है, लॉकडाउन कभी पढ़ा ही नहीं था. हम लोग मतलब इक्विटी मार्केट के लोग खाली थोड़ा बहुत कुछ पढ़ रहे थे. बट स्ट्रक्चरली इफ यू थिंक ऑफ इट, हाउ टू प्रोटेक्ट योर पोर्टफोलियो फॉर सच इवेंट्स, कुड आई or could anybody of us, sorry, I'm not talking about my portfolio, but could any of us have planned for this and buy, let's say, put option in my portfolio? सर मेरे पास 10 लाख का पोर्टफोलियो था, मैंने ना 5 लाख का पुट ऑप्शन खरीद के रखा था. एनीबडी? पॉसिबल ही नहीं ना, मतलब कि कब से खरीद के रखूँ मैं? अक्टूबर नवंबर से पुट ऑप्शन लेके रखूँ तो 6 महीने का पुट ऑप्शन का प्रीमियम देते देते मेरा पोर्टफोलियो खलास हो जाएगा. व्हेन एक्चुअली द क्राइसिस हिट इन 2020 मार्च. तो व्हाट टू डू? So after Nicholas Taleb worked on this a lot during the GFC, then lot of theories came up कि यार नहीं बराबर है but ये impractical है, उसके बारे में कुछ कर नहीं सकते अपन. Learning important है and how to deal with it after it happens. So another term got coined which is called grey rhino. अरे अनिल भाई फाइनेंस लेक्चर है क्या, एनिमल विनिमल, मेरे को वाइल्ड लाइफ में इंटरेस्ट नहीं है बॉस. बट वेरी इंपॉर्टेंट, अनदर बुक आई एम शेयरिंग, द नेम ऑफ दिस बुक इज द ग्रे राइनो, ऑथर इज मिशेल वूकर. वो ऐसे इधर कोई ऐसे कॉन्फ्रेंस में बैठी थी, बोले हाँ ब्लैक स्वान के बारे में बहुत सुना बट मुझे जमता नहीं है, क्या करूँ उसका मैं, आई कैन नॉट टेक एनी एक्शन.
तो शी कॉइन्ड दिस टर्म कॉल्ड ग्रे राइनो. राइनो मतलब समझते ना सब लोग. एनीबडी फ्रॉम असम ओवर हियर? Because you people are there from all over the world, all over India. Anybody belonging to North Assam? वहाँ का नेशनल एनिमल है, बराबर ना? राइनोसरस, गेंडा जो अपन बोलते हैं ना, उसका कलर क्या होता है? ग्रे ही होता है. ग्रे ही है, करेक्ट? तो ग्रे राइनो का मीनिंग क्या है? कि these are certain events open for the world at large to see and you can be prepared for that in well in advance. अपन चलो कोई है नहीं असम से, बट वाई आज दिस क्वेश्चन समबडी से, तो बोलेंगे बॉस नेक्स्ट वेकेशन में हमको भी लेके जाना, आएंगे तेरे साथ में, काजीरंगा जाएंगे राइनो को देखने, बराबर मैम? अभी अपन गए काजीरंगा में, बाहर ऐसा कुछ मीटिंग छोटी चालू हो गई, बाजार चालू हो गया, बोले बॉस स्टॉक कौन सा खरीदना है, उतने बोले एक राइनो भाग के आ रहा है, तो अपन क्या करने का? अपन खड़े रहेंगे? नहीं, राइनो आएगा तो मुझे क्या करना है? तो इट इज योर फॉल्ट. अरे राइनो कहीं से छूट के आ गया, बेचारा भाग रहा है, प्राणी है वो, तो उसको क्या मालूम कि अपन बॉम्बे से आए, अपने साइड में हटना पड़ेगा बॉस उसके लिए, उसको जगह करके दो. आप नहीं करोगे तो आपका फॉल्ट है. तो ग्रे राइनो इज अ लर्निंग ऑफ हाउ टू रिकॉग्नाइज दिस काइंड ऑफ इवेंट्स और रिस्क्स which are known to the world at large, which are running towards you, and how to take action to protect yourself from that. मार्च 2020 में मोदी साहब टीवी पे आए, पेंडेमिक क्राइसिस चल रहा है, वो 21 दिन का कुछ लॉकडाउन, बराबर? नेक्स्ट डे बाजार में इंपैक्ट आ गया. उसके 3 महीने पहले वी वर हियरिंग न्यूज कि चाइना में सम वायरस इज स्प्रेडिंग. ओके, मस्ट भी चाइना में अभी तो वायरस आते रहते, क्या करेंगे, सीजनल है, नहीं आते रहते हैं जेन्युइनली. अरे हंसो मत, सीरियसली बता रहा हूं मैं, सीजनल है उधर, मतलब यू नो. थोड़े टाइम बाद ऐसा न्यूज आया कि दैट वायरस इज वेरी डेडली एंड फ्यू पीपल इन हांगकांग स्टार्टेड गेटिंग इट. बराबर है, हांगकांग तो इतना चाइना का बॉर्डर के बाजू में ही है, तो वही बराबर है. सिंगापुर में एक फाइंड आउट हुआ. आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? वायरस है बेचारा, वो तो प्राणी है, उसको क्या मालूम कि सिंगापुर की बाउंड्री है, मेरे को वीजा लगेगा इंडिया में आने के लिए. आ गया इंडिया में. ग्रे राइनोसरस है वो दौड़ के आ रहा था, उसको क्या मालूम आप काजीरंगा में बॉम्बे से आए हो, ये तो उसका रास्ता है जाने के लिए. बीच में वीडियोग्राफर वाले साहब खड़े हैं, वो तो उसको उड़ा के निकल जाएगा. सॉरी, आपको कुछ होगा नहीं, मजाक कर रहा हूँ भाई, नहीं तो वो इंश्योरेंस है ना वीडियोग्राफर का, भाई समझ लो. नाउ हाउ मेनी ऑफ यू थिंक ओवर ईयर 2020 मार्च was a black swan event or grey rhino event? I don't know, it is a debatable thing. If somebody is a good analyst, somebody is tracking global markets and global news flow, somebody is realizing that virus is an animal, he doesn't need visa, he will cross over to Singapore, now he will cross over to Australia also and come to Mumbai also. एक बात बता रहा हूँ जस्ट, मतलब तो how to recognize these kind of events, how to clear human bias. Behavioral science is a very important thing. Anybody has got behavioral learning, behavioral finance? बहुत इंटरेस्टिंग एरिया है, फ्यूचर में आप लोग को उसके ऊपर ज़्यादा ज्ञान लेने के लिए भी. ह्यूमन माइंड इज क्रिएटेड टू इग्नोर सच थिंग्स विच वी डोंट लाइक. हाँ वायरस है ना, तो सब मैं क्या करूँ, मेरा दुनिया चल रहा है, मेरे को तो नेक्स्ट वीक में घूमने के लिए जाना, गोवा का टिकट है बॉस. ये क्या वायरस भी, मेरे को कुछ नहीं होता है. हम लोग तो लोकल इधर कॉलेज में नीचे बैठ के, जमीन पे बैठ के चाय पीते हैं लोकल, और रास्ते पे वो आजकल सैंडविच वाला है कि नहीं सामने, अभी तो सब रोड साइड सब फूड बंद हो गया, बट व्हेन आई वाज कमिंग टू योर कॉलेज मेनी इयर्स बैक, यू नो, देयर वाज अ रोड साइड सैंडविच वाला बाहर एंड ऑल दैट है अभी ना. हाँ, तो अपन ये सब कचरा खाने वाले, अपने को वायरस भी कुछ नहीं लगेगा, हमारा बॉडी यूज्ड टू है. माइंड सेज ह्यूमन बायस. अभी शायद आपको पढ़ने को होगा नहीं, बट ब्लैक स्वॉन, अरे ग्रे राइनो बुक पढ़ोगे, तेरा ह्यूमन बायस इज विच मेक अस बिलीव कि ये सब चीज़ जो है मेरे को नहीं होगी, क्योंकि मुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता ये चीज़, तो यू टेंड टू इग्नोर दैट. बट एज ए एनालिस्ट, एज अ फाइनेंस प्रोफेशनल, यू नीड टू लर्न टू रिकग्नाइज दैट एंड बिल्ड इट इन टू योर डिसीजन मेकिंग. ई फॉर इवेंट रिस्क, कॉफी पोर्टफोलियो, बराबर? एवरीबडी विद मी? चलो, वेरी गुड. नाउ दिस अदर पार्ट व्हाट आई वाज शोइंग कि भाई मिड एंड स्मॉल कैप में क्या हो रहा है. लार्ज कैप का अपन ने वैल्यूएशन सब बता दिया, मिड एंड स्मॉल कैप में क्या हो रहा है. इन द बिगिनिंग डिस्कशन मैडम मेंशन कि भाई सम नंबर ऑफ ईयर्स वेल इक्विटी मार्केट हैज डन वेल एंड वेदर विल बी 9th टाइम लकी और 10th टाइम लकी और व्हाटएवर, ऑल ऑफ दोस थिंग्स, बट नाउ विद एग्जैक्ट नंबर एंड डेटा. लिटिल बिट बिजी स्लाइड एंड from the back maybe you can't see it very well, so I'll read out just 2 numbers over here. Later on I will convert this into PDF and share with everybody, anybody who has interest, matlab might be.
So what this calculates is that whenever in the large cap or mid cap or small cap, we have seen large number of days where market has gone up by more than 1% in a day, usually the next year has followed by a little bit challenging return profile for various reasons. Flows are coming, flows will probably slow down. Earnings growth has happened 40%, maybe it will rationalize. Various reasons. So what will happen in the next coming year, I don't know. But as an analyst, I need to know, it's my business, it's my job. So calculate different data points, try to infer upon it and implement it in a most suitable way in your strategy. As per this data point, publicly available data point, it appears that at least what history has shown us, if that were to repeat, then it could be a challenging time coming forward, especially for the mid and small caps. Another very interesting number which you can look at and be ready as a talking point whenever is about connecting economy with the market. In the beginning, we spoke about the coffee concept where we compared corporate earnings with the company's prices, correct? P2E. Now here, if you go one step above, instead of just one company's earning, I'm looking at the entire country and looking at the GDP of the country and the market cap of the overall country's capital markets. So market cap to GDP ratio, that becomes a useful or important metric to look at. So whenever that number also goes very low, it signals some kind of attractiveness of the market. Currently it is high but little bit lower than long-term average. Again, these are just small data points and pieces in mind to factor in how to look at future. I don't know whether this will be a time when it will be creating a new history. चलो okay भाई, मैं बता रहा हूँ कि long term history has been where in India our market cap to GDP ratio has been little bit below the long term high. United States currently it's 165, last 10-year average is 153, slightly higher than last 10-year average. Does it mean it will go down? I don't know. Maybe this is going to set up a new benchmark for future. Earnings are going good, flows are coming. If there is no very significant event risk, आपने तो बताया सर अभी कि CFE देखते रहो और मार्केट का व्यू लेते रहो. Agreed. But these kind of things are important to keep in mind to analyze how it can go wrong. And like ma'am mentioned that asset allocation is important. So I have captured over here one aspect of gold and what we feel can be useful for gold in the coming year. Broadly, we are all comfortable that yes, we are going to see interest rates starting to decline. After the pandemic, there was a huge push. Everybody was reducing interest rates. Then suddenly everybody got panicked. There was a rising interest rate. Now cycle is set to turn gradually. Historically, whenever there is an interest rate decline, we have seen gold does very well. So with that, we need to be clear that if gold is to do well, if some of these event risks were to play out and equity markets will not do well, then does it make sense to have some gold in my portfolio? That is a question we have to analyze. And then, as sir also mentioned, that everybody is different. You need to identify the way in which your portfolio can be created, add some component of gold in your portfolio. I am just showing that historically, whenever we have seen interest rate declining, gold tends to outperform. Okay, yes, thank you very much. Now what to do about it? Tactfully incorporate in your portfolio for a certain percentage. Everybody with me following that? Now I will quickly jump to the most important part of my session. मार्केटिंग वाले का इसके बाद आएगा. चलो अनिल भाई आपने बता दिया कि ये हाउ टू इन्वेस्ट, लुक एट कैपिटल मार्केट्स, गोल्ड में थोड़ा करो, ये करो, वो करो. ठीक है यार, वो सब ठीक है. मेरे लिए क्या बता रहे हो? What for me? What is my investment for 2020 from 2024 today? 2035. I see myself. मैम has already given you a big target कि बस 10 साल बाद आप CEO बन के आओ मैडम को मिलने के लिए, उनको खुशी रहेगी, आप बच्चे लोग को उठाओगे यहाँ से कैंपस प्लेसमेंट में. करेक्ट मैडम? तो ऐसे थोड़ी होने वाला है. मैडम ने बोल दिया वो स्टेज पे, so you have to honor the commitment.
So how will you invest for the next 10 years so that you can honor that commitment? That is what I'm trying to highlight here. How to focus, how to कॉफी पोर्टफोलियो, कॉफी व्यू, सीओ, एफई के अलग अलग लोग अलग अलग बताएंगे, सर हम हमारा खुद का डेवलप करेंगे, आप छोड़ दो उसको. करेक्ट? Career development is very crucial for me right now. After few months, I'll be going for my campus placements. So for that, I have developed this very interesting framework to think about your 2035. 2-3 साल आगे पीछे 5 साल छोड़ दो. Sangeeta ma'am mentioned that how don't look at earning small amounts during your trading portfolio, but focus on your job. It will lend you bigger increments in your annual salary. Similar, something like that. Try to see 2035. How the world will look like in 2035. कभी सोचा है किसी ने ऐसा कि 2035 में मैं क्या कर रहा हूँगा या क्या कर रही होंगी? Anybody? Let's say 10 years back, had you thought I'll be in SIMSREE 2024 में मैं SIMSREE में बैठे रहूँगा, बस IMC में एक लेक्चर सुनेंगे? सोचना चाहिए. चलो उस टाइम पे ठीक है, नहीं सोचा, मम्मी पापा थे, कॉलेज में चले गए, कॉलेज के बाद MBA करना है, ये चल गए, फ्लो वाज ऑन. बट नाउ इट्स इंपॉर्टेंट टू थिंक व्हाट आई नीड टू बी इन 2035 एंड हाउ टू स्टार्ट डूइंग दैट. मैं भेजूंगा बाद में स्लाइड, ऐसा नहीं, बट आपका नोट जो लगता है और क्वेश्चन के लिए पूछना है तो पूछ के रखो, आपको चांस दूंगा मैं 10 मिनट का लास्ट में. आई एम नॉट एस्ट्रोलॉजर बॉस. क्या बोल रहे हो अनिल भाई, मैं फाइनेंस प्रोफेशनल हूँ या मार्केटिंग वाले 2-4 बंदे लोग हूँ मैं. हाउ आई विल थिंक व्हाट इज 2035? ब्रॉडली थिंक, ब्रॉडली हाउ द वर्ल्ड विल लुक लाइक, हाउ द वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस विल लुक लाइक, हाउ ग्लोबली इंटरकनेक्टेड विल बी. सर मेंशन अबाउट ब्लॉकचेन, व्हाट विल ब्लॉकचेन डू टू माय लाइफ एंड टू द वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस. दैट वे आई एम सेइंग, थिंक ऑफ 2035 हाउ द world will be, and then in that think who I want to be in that world. Everybody with me now? How the world will be, who I want to be in that world, and who I am today. अभी मैं इधर बैठी हूँ चर्चगेट पे सिमश्री में, मेरा पढ़ाई चल रहा है, 1 साल और बाकी है. I have access to big amount of resources. I have access to my finance lab. I have access to my best of the class professors and faculty. I have access to my mentors and my peers who can be my mentors. Who I am today and what all resources I have for the next 1 year, innumerable. How to move from here to there, my world in 2035, who I want to be in that world, very crucial, very important. And in that journey, acquire the requisite skills, acquire the requisite knowledge, soft skills. One of the colleagues I met just now बोले कि अनिल भाई मैंने CFA चालू कर दिया है, आपको मैंने उधर भी दिखाया कहीं पे. Who was saying that CFA किसने चालू? How many of us over here are doing CFA level 1 or level 2 or anything? ठीक है, तो मेरे को शायद पहचान में नहीं आ रहा, but somebody we spoke in the morning. Sorry, I am one of you guys here. कौन था? हाँ, तो हाथ ऊपर करो ना बॉस. मेरे आप लोग इधर क्यों बैठे हो? इधर आ जाओ. मेरे को मेरा ऐसा ओरिएंटेशन चेंज करना पड़ेगा कैसे? कम हियर. आई मीन अनलेस यू हैव सम समबडी टू वेलकम और समथिंग, कम हियर. देयर इज एम्प्टी चेयर्स यार. मुझे भी अच्छा लगेगा, रूम भरा हुआ लगेगा तो वो सर. ठीक है, नो इट्स ओके डियर, आई एम जोकिंग. एज पर योर कंफर्ट, फील कंफर्टेबल, नो प्रॉब्लम. थोड़ा एम्बेरस, मतलब कि बस नहीं हम लोग को लाइमलाइट में नहीं रहने, फर्स्ट रो पे बैठ जाएंगे तो लोग मेरे को सवाल पूछेंगे. ठीक है. सो बिल्ड योर रेलेवेंट स्किल सेट, नॉलेज, सॉफ्ट स्किल्स, वॉट एवर यू नीड फॉर सक्सेस इन 2035. सर ने बोल दिया ब्लॉकचेन बड़ा बनेगा. कितने लोग को पता है ब्लॉकचेन में क्या होने वाला है? मुझे भी नहीं पता है. बट आई वॉज लाइक दिस इन योर प्लेस. आई वॉज नॉट फॉर्चुनेट इनफ टू गो टू अ बी स्कूल लाइक यू गाइज डिड, you guys are doing. I did my traditional commerce from HR college, then I did my CA. काफ़ी लोग बोले क्या बोरिंग कर रहे हो अनिल, मज़ा नहीं आ रहा है. तो मुझे भी थोड़ा बहुत ऐसा लगा, and I shifted to financial markets. I did my CFA. So I never had this kind of a chart or something like that. But in my mind, maybe involuntarily, I was doing like that. So when I was doing this way, I'm just sharing so that you can relate to it. In those days, asset management was relatively newly opened for private sector. So I thought 10 years later, it will become big. So let me start something in that field. I did not know what is money management or what is a ETF or what is a coffee framework or whatever. But I started something in that way.
So if you feel this will become big, technology will become big, blockchain will become big, finance is there only is my core, something I'll do in fintech, might be, I'm just saying. So start thinking like that way. Start learning some different areas, soft skills, extra skills, whatever, that will help you in the future. Because let's say things are changing so fast. Many of you are doing some financial markets and some trading. How many of you know how to do coding? Anybody else? सर आप एक बता दीजिए, लास्ट जो है ना, हाँ यू जो आप कौन सी लैंग्वेज कोडिंग कर आता है आपको? पाइथन. हाँ, सब लोग को पाइथन आता है. थोड़े बहुत लोग आर सीखे होंगे, आर. बराबर. आपको क्या लगता है 2035 में, मैडम क्या लगता है, पाइथन लोगों को पहचान में आएगा? पाइथन, अरे बॉस किधर है पाइथन, बॉस क्या हाल है? बराबर ना? एनीबडी रिलेट टू दैट? व्हेन आई वाज यंग देयर वाज अ लैंग्वेज कॉल्ड पास्कल. कोई बोले गाली दे रहे हैं मेरे को. कोबोल एंड पास्कल, बराबर आपने सुना है थोड़ा बहुत, सडन अब मैम आपने सुना ही रहेगा. बट आज यंग बच्चे लोग कहाँ, पास्कल कोई धंधे में थोड़ी यूज होता है. करेक्ट. सो इन 2035 सर, आपको बोल रहा हूं जो आपने आंसर दिया, 2035 पाइथन का फायदा होगा? होगा नहीं, ना नहीं बोलता हूं, बट कुछ नया आइटम आ जाएगा. तो आप लोग को भी ये देखना है कि वो नया आइटम को मैं कैसे अडॉप्ट करूं और सीखना चालू करूं. मैं बताता हूं एक लैंग्वेज जो मुझे भी सीखनी है, उसका नाम है जूलिया. एनीबडी हर्ड ऑफ इट? जूलिया? सर यू हैव हर्ड ऑफ इट, वेरी गुड, थैंक यू. सो जूलिया इज अ न्यूली इवॉल्विंग लैंग्वेज. दे आर क्लेमिंग वी आर 1000 times फास्टर देन पाइथन. आज बोल रहा है वो, तो 10 साल बाद तो क्या ही होगा पता नहीं. 10 साल बाद जूलिया भी ओल्ड हो जाएगी, मैं ना नहीं बोलता हूं, बट अपने को जूलिया तक तो पहुंचना है. आज मैं खड़ा रहो, बोले सर मुझे पास्कल आता है, तो बोले बस तू तो बाहर ही बैठ, अंदर क्यों आया मेरे से बात करने के लिए? एवरीबडी फैमिलियर विद इट, रिलेट टू व्हाट आई एम सेइंग. फ्रैंकली मुझे भी आज पाइथन इतना आता नहीं है. मेरे यंग बच्चे लोग वो लोग करते काम, कोडिंग पाइथन का मैं ज्ञान दे देता हूँ, ये बना के दो, वो बना के देते मॉडल. बट एट लीस्ट आई कैन रिलेट टू इट, अंडरस्टैंड, आई हैव अ ग्रिप ऑन इट, एंड आई एम सेइंग आई वांट टू लर्न जूलिया फॉर माय फ्यूचर. Julia is co-developed, co-founded by a very dear friend, so I know more about it. So don't feel upset कि अरे मैंने सीखा क्यों नहीं, जूलिया के बारे में सुना क्यों नहीं. But it's available in public domain. It's a free, that whatever free open source thing, anybody can learn it little bit. What I'm trying to say कि sitting today, we need to try to broadly formulate our view of the world. That view is going to rapidly keep changing. So it needs a lifelong learning and important to do networking. चलो मैं आज मिला छोड़ के चला गया, आपको क्या फायदा हुआ मेरे से? हाँ अनिल भाई कुछ बोल के गए थे, कॉफी नेक्स्ट टाइम स्टारबक्स में आएंगे, अनिल को याद कर देंगे, ये कॉफी पिला दिया है. कोई सोचेगा नहीं मेरे को एक और चीज सुना था मैंने, जूलिया. वापस चलो फोन करता हूँ, अनिल जूलिया के थोड़ा और ज्ञान दो, मुझे सीखना है. दैट इज द पावर ऑफ नेटवर्किंग. नहीं तो सुन लिया, कुछ लोग मैंडेटरी है, कर लिया, लेक्चर का टाइम हो गया, जा रहा हूँ, मेरे को भी जाना है, फटाफट चलो लेट हो गया, खत्म हो गया. यूज दिस टू क्रिएट अ पावरफुल नेटवर्क. This is the most important aspect of my discussion of today. उसके पहले का जो था सब इतना यूजफुल नहीं है, मैं सामने से बता रहा हूँ. नो डाउट इट इज वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, बट दिस कीप इट इन माइंड. स्पेंड टाइम ओवर द नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स, कपल ऑफ मंथ्स एज यू कम टू योर ईयर टू, कि मेरा व्यू में क्या बना के रखा हो. वेरी क्विकली आई वॉन्ट टू जस्ट हाईलाइट अबाउट बिजनेस ऑफ एसेट मैनेजमेंट and hiring potential over there, like I mentioned in the beginning. So today we have got about more than 40 asset management companies in India. There are large number of AIF, alternative investment funds, PMS providers, etc. So as that industry is growing, there are about 5 other players looking to enter into India. So there will be a lot of hiring by these new players and existing players as they are growing. So I urge you to analyze a little bit more, see how this can fit in your mind, whether it's useful for you. And there can be multiple roles over there. Don't just think of one role कि हाँ भाई एसेट मैनेजमेंट मतलब मुझे फंड मैनेजर बनना है या रिसर्च एनालिस्ट बनना है. ओके, वो भी अच्छी बात है, बट देयर आर मेनी अदर इक्वली इंटरेस्टिंग एंड इक्वली रेम्यूनरेटिव रोल्स विच यू शुड बी अवेयर ऑफ एंड यू शुड थिंक अबाउट. देयर आर मेनी गुड रोल्स इन प्रोडक्ट मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, सेल्स. Your sales is not sales and marketing or relationship sales. क्या मैडम मेरा ये फंड ले लो, मैडम मैं कल वापस मिलने आऊँगा, फॉर्म उठा के लेके जाऊँगा, वो सब कोई नहीं करता है अभी. Sales in our team, so many of my sales colleagues are CFA charter holders. Sales is a investment sales.
You need to understand this exact thing, how market is doing, how globally things are happening, and present to the client ke because of this reason in your portfolio now you consider to add this particular allocation. So very useful, very interesting roles will keep coming up. Some areas of competencies which you can develop, one is of course you need to have good industry knowledge, soft skills is very important, and some areas of your mastering some of your education, like you are doing a very strong platform like an MBA from SIMSREE, that will be very helpful. Some other professional curriculum will be useful, and hiring where it happens from. So very often entry level roles come from campus placements, like we were discussing, ma'am, that we also come sometimes to SIMSREE campus. Hiring is very small, few people we absorb, but I'm just saying, like us, there are many asset management companies, 45 companies. Campus placement can be a good entry point to gradually move up. Of course, then there are lateral hirings. Not even within asset management, then there is an entire ancillary ecosystem. So we have got people who are the index providers, we have got brokers, we have got large investors who are family office or asset owners. So you can look to align your aspiration through any of these businesses in a very good way, and then move towards your final objective in a gradual manner. So with that, this was my last slide. Can we be in touch? But I have included the new one aspect of marketing. I'll just highlight to you. Digital marketing is becoming very important now. It's very expensive also, but it's becoming very important. How can I market myself as an individual studying in the financial industry and after 1 year looking to seek a job? बराबर, वही सबसे बड़ा मार्केटिंग स्किल मेरे लिए आज वो सीखना है. हाउ मेनी ऑफ अस ओवर हियर, अभी लास्ट है तो मैं थोड़ा एक्टिविटी भी करा लेता हूँ, चलो. हाउ मेनी ऑफ अस हियर हैव इंस्टाग्राम अकाउंट? प्लीज स्टैंड अप. इंस्टाग्राम अकाउंट किसके पास है? सब लोग के पास बाय एंड लार्ज रहेगा. अरे मैडम आपके पास इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं है? वाह. यहाँ पे भी सब उड़ गए. चलो, वेरी गुड. अभी okay, interesting thing. So how many of us in this last, let's say 1 month, have posted any one reel on Instagram? If you have जिसने नहीं किया वो बैठ जाओ. किसी ने भी नहीं किया, कुछ इंस्टाग्राम पोस्ट नहीं किया. ये तो चीटिंग है यार बस. Okay. How many of us have a LinkedIn account? Stand up. चलो बस, मैं भी ऐसे जल्दी से बैठ, मैं खड़ा हूँ साला 1 घंटे से, इतना मेहनत कर रहा हूँ. अब इसमें तो टैक्टफुली कोई नहीं तो भी खड़े हो गए. हाँ सर, लिंक्डइन का कुछ तो बात बोली, खड़े रहे सब लोग. देखो इधर भी लास्ट में, अरे वो वीडियोग्राफर भी खड़ा हो गया. देखो नहीं बोल, ये तो कुछ पता की बात बोल रहे हैं. नाउ लिसन केयरफुली बिफोर सिटिंग डाउन. हाउ मेनी ऑफ अस हियर have not posted anything from my LinkedIn handle in this last 1 month? Those people sit down. Who have posted anything in the last 1 month, keep standing. Genuine हो, मैं देखने वाला नहीं LinkedIn किसी का जाके. लास्ट 1 मंथ में कुछ भी पोस्ट नहीं किया है वो लोग बैठ गए हैं. अभी 8-10 जन रुके हैं. इधर 1-2 यंग बंदे, काव्या मैडम भी बैठ गए हैं. How many of all of you people have at least 500 followers on LinkedIn? जिनका नहीं है वो बैठ जाओ. बॉस, आप लोग इतने यंग प्रोफेशनल हो, आपके कॉलेज की, आपके बैच के 200, दूसरे बैच के 200, 3 बैच कनेक्ट करके 200, 600 जन तो वो हो गए. सर है, मैडम है, आप लोग ने आज तक कितने लेक्चर अटेंड किए, सबके लोग हो गए. सो योर LinkedIn इज योर बिगेस्ट मार्केटिंग टूल. When you go for the job after 1 year, what you will present? ये मेरी CV है सर. सबकी CV एक सिंगल फॉर्मेट में बनती है, मेरे पास भी आती है, मैं पढ़ता हूँ. मतलब sorry, I'm not saying in a bad way, ma'am, but I'm just saying. The smart friends from the industry outreach will say, सर ये लिखो, मेरे 50 जन का लिस्ट है, आप सिलेक्ट करो सर इसमें से. Okay, in a very good way I do it. Don't laugh, madam. I'm not saying it in a bad way. I'm saying very genuinely, and I appreciate everybody. सब बहुत मुझे लाइटली ले रहे हैं आज, बट मैं सीरियसली बता रहा हूँ.
out of the shortlist, it's my habit and my HR's mandate, okay, look at the annexure to these people's CV. What is annexure to the CV? That is my LinkedIn profile. मैं किसके साथ कनेक्टेड हूँ, मेरे लास्ट 1-2 महीने में क्या पोस्ट किया है मैंने. अगर मैं बोलूँ कि मेरे कनेक्शन है 25, 50, 100 लोग जो ये रूम में बैठे हैं, तो उससे मैं क्या ज्ञान लूंगा? कुछ नहीं. अगर मैंने कनेक्ट में है अनिल गिलानी, तो अनिल गिलानी कुछ ना कुछ पोस्ट करता है तो कभी ना कभी मुझे बेनिफिट मिलता है. ये लास्ट में डाला मैंने, ये पहले नहीं था मेरे पास. मैडम ने बोला तो मैं फटाफट जाके डाल के आया कि भाई ये कुछ सिखा दूंगा तो जरा लोगों को अच्छा लगेगा. Sit down now, but I mean, thank you for participating in this. What I'm trying to highlight, use marketing in a very shameless way. मैंने अभी मेरे LinkedIn पे अभी एक पोस्ट डाला था थोड़ा टाइम पहले. Many of us are grown in a very traditional Indian cultural family, you know. तो ह्यूमिलिटी अपने में आती है, मेरे में भी थी, आज भी है. Unknowingly, it comes up on the fore. I'll tell you how I did it. Anybody realize today what I'm speaking? I was sitting here, madam was introducing me. बोले अनिल मैंने ऐसा किया, ये किया, वो किया, फिर कुछ अवार्ड का बोले, मुझे भी याद नहीं था कौन सा अवार्ड क्या बोले, तो मुझे थोड़ा ऑकवर्ड होने लगा. बोले मैडम बस अभी छोड़ो ना, अभी क्या ये सब बात करने का, मतलब ठीक है वो पढ़ लेंगे मेरे बारे में, कुछ तो किया इसके लिए आपको ज्ञान लग रहा है तो मुझे आज बुलाया है. दैट इज आवर कल्चर, नेचर. मेनी पीपल डोंट हैव दैट, बट इन इंडिया मोस्ट ऑफ अस हैव इट. Why I am saying this? We need to overcome that and market ourselves shamelessly. शर्म नहीं रखना है मुझे. मैंने ये किया, यस मैंने किया है, इसके लिए मैं आज खड़ा हूं इधर, मुझे बुलाया है. मैं फिस्कस में सेक्रेटरी थी, इसके लिए मुझे आज जॉब के लिए प्रेफरेंस दो. आप समझ रहे? मेरा लिंक्डइन जाके देखो, मैंने पिछले 1 महीने में 5 पोस्ट डाले हैं. ऐसे नहीं कि टाइम पास करके कुछ भी, बट कुछ रेलेवेंट कुछ तो भी डाला है. और मेरे कनेक्शन कौन है? हु इज माई कनेक्शन? सर इज माई कनेक्शन, मैडम इज माई कनेक्शन, अनिल गिलानी इज माई कनेक्शन. Anybody of how many of you? Okay, last time. Sorry, just to humor me. How many of you are connected with me on LinkedIn? Apart from you, madam, of course. Anybody else is connected with me on LinkedIn? खड़े हो तो ना प्लीज बॉस, एक फोटो ले लो बॉस भाई, ये 2 जन के. वो उठ जाओ. थैंक यू वेरी मच बॉस, मुझे अच्छा लगा. बट मैं ये बोल रहा हूँ कि बाकी के सब थैंक यू अप्रिशिएट. मतलब हियर आई एम नॉट ट्राइंग टू मार्केट माई सेल्फ, मुझे वो नहीं करना है, बट दिस इज अबाउट द एस्पेक्ट टू कनेक्ट विद द पीपल सो दैट यू कैन लर्न फ्रॉम व्हाट दे आर पोस्टिंग. बैठ जाओ. थैंक यू डियर. माई रिक्वेस्ट टू ईच वन ऑफ यू हियर इज लाइक हाउ आई फुलफिल योर रिक्वेस्ट. 1 घंटा टाइम चाहिए मेरे को आपका. रैंडमली किसी का मैसेज आया है, आई डिडंट नो हर, कविया मैडम. मतलब ठीक है, सोचता हूँ, नाम पढ़ा आगे सिमश्री, मतलब मैडम डन, आई कमिट. आई हैव कनेक्ट विद योर कॉलेज सिंस पास्ट सो मेनी इयर्स. आई डिस्क्राइब टू मैडम एंड सर हाउ आई फुलफिल्ड कमिटमेंट. आई एम हियर एट अर्ली मॉर्निंग. आई वॉन्ट कमिटमेंट फ्रॉम एवरीबडी ओवर हियर. पूछू बोलू क्या दोगे? फिर ऐसा नहीं हो सलमान खान जैसा, एक बार मैं बोल दिया तो मेरा भी सुनता, क्या समथिंग डायलॉग ऐसा कुछ है ना जो सब लोग करेंगे. बॉस आप नोट करो मैडम. इन द नेक्स्ट 1 year लीडिंग अप टू योर प्लेसमेंट एंड योर जॉब, ओके, लॉन्ग टाइम, ऐसा नहीं कल का कल करो. कल तो मेरा मूवी का टिकट है सर, इरोज थिएटर नया बन गया है, वहां जाना है, जाओ. बट थिएटर में जाने के टाइम भी सोचो क्या मैं इसमें से लर्निंग ले सकता हूं. मेरे माइंड में चल रहा है इरोज का एक लिंक्डइन पोस्ट बनाना, बहुत दिन से मैं जा नहीं पा रहा हूं. हाउ इकोनॉमिक्स चेंज्ड एंड हाउ नाउ दिस ओल्ड थिएटर हैज बिकम अ मनी स्पिनिंग थिंग. डिमांड सप्लाई समथिंग लगा के कुछ पोस्ट कर दो, फोटो खींचो अपना मस्त ऐसे 2-3 दोस्त लोग के साथ इरोज थिएटर के नीचे और लगाओ. बिटवीन नाउ एंड दैट ईयर व्हेन आई कम हियर बिफोर योर प्लेसमेंट एंड आई से हाउ मेनी ऑफ यू हैव 500+, सब लोग खड़े रहेंगे. हाउ मेनी ऑफ यू हैव 1000+, सब लोग खड़े रहेंगे. हाउ मेनी ऑफ यू पोस्टेड 5 पोस्ट इन लास्ट 1 month, सब लोग खड़े रहेंगे. बोलो कौन करेगा? फर्स्ट पोस्ट आई वॉन्ट बिफोर द 15th March, पोस्ट समथिंग, tag me on it. I guarantee you, I assure you, I will engage with your post and write a thank you and further comment on that. If nothing, post this. Okay, coffee, I post this. Everybody I am requesting,
फर्स्ट पोस्ट क्रिएट समथिंग अराउंड दिस लर्निंग. आप लोग कभी होता है इंटरनल कुछ ब्लॉग की हमने ये सीखा, फिर वो तो एक जन का काम होगा, वो फिस्कस की कमेटी मेंबर का. सब लोग को बता, मार्केटिंग वाले को पहले, what I learned from this. Create whatever your learning is. Put some data, put some number, put that post, tag me, I will engage with you and reshare your tag to enhance your visibility. Whoever is liking your post, go and friend them also further. That will increase your horizon. Now their feeds also will start coming every morning in your phone. You will learn something new. आप समझ रहे, followed or not? सेल्फ मार्केटिंग, सिंपल फॉर्म. मैं अभी तक कंपनी ज्वाइन नहीं किया हूँ किधर भी, तो मेरे पास मार्केटिंग बजट नहीं है सर, तो कैसे करूँ? लिंक्डइन फ्री में मिलता है. सर्टेन फीचर्स आर विद प्रीमियम फीचर्स मैट भी, बट मैं तो आज तक कभी पे नहीं किया, फ्री में यूज करता हूँ. 25,000 लोग मुझे फॉलो करते हैं, कोई ना कोई कुछ ज्ञान देते रहता है. वो इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए. मैं उसमें से 1000 लोग को फॉलो करता हूँ जिनका फीड मुझे आता है डेली बेसिस पे, मुझे बहुत वैल्यूएबल लगता है. 100-200 गोरे लोग को है तो ग्लोबल ज्ञान मिल जाता है. नहीं, मजाक नहीं, सीरियसली बोल रहा हूँ मैं. तो आई अर्ज ऑल ऑफ यू ऑल्सो टू डू दैट काइंड ऑफ मिक्स. Add some people from blockchain. Sir has mentioned blockchain is going to become big. Add this person from Julia. Boss, Julia का जो फाउंडर है ना, उसका नाम है विरल शाह. उसको ढूंढ के ऐड करो सब लोग, तो मालूम पड़ेगा जुलिया क्या हो रहा है, मैं कैसे सीखूंगी उसको. Add a diverse set of people in your account, so you'll get the feeds of diverse people. Like how Instagram we do ना, कोई वो लिंक्डइन, इंस्टाग्राम की वो लड़की को है, वो जो कुकिंग का कुछ करती है, कोई अभी जाके वो थाने में नमो पार्क डेवलप हो उसका कुछ लेके आए. अभी वो जामनगर का जू का सब चल रहा है इंस्टाग्राम पे. मैं भी इंस्टाग्राम यूज करता हूँ. हाउ मेनी ऑफ यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम? आई यूज वेरी रेगुलरली. आई एम नॉट सेइंग नो, कंटिन्यू दैट. दैट इज फॉर द फन. शाम को मैं आज 10-15 मिनट देख लेता हूँ उसको, कभी डाल भी देता हूँ सैटरडे संडे को. जा रहा हूँ रास्ते में डॉग ही मिल गया तो उसका फोटो तो लिंक्डइन पे लगा नहीं सकता हूँ, तो इंस्टाग्राम यूज करने का है. तो इट्स इंपॉर्टेंट. बट ग्रेजुअली आई वॉन्ट ईच वन ऑफ यू टू शिफ्ट टू this aspect. This is my last slide. Marketing related friends को भी helpful हो गया. Now anything else, any questions, inputs, queries? I have my 5 minutes left, 10 minutes, whatever. Okay, thank you very much and all the best. Thank you. बोलो कोई क्वेश्चन है, नहीं तो फिर मेरा चाय एक बड़ा बना के रखा है. एनीबडी हैज एनी क्वेश्चंस और थॉट्स और एनी कमेंट्स, सजेशंस और एनीथिंग यू रिलेट टू? यस, दिस इज इंपॉर्टेंट, मजा आया सुनने में, ऐसा कुछ भी. एनी क्वेश्चंस? अरे सेल्फ मार्केटिंग करना है, वो शर्म नहीं रखना, कुछ है तो पूछ लो. बोर हो गया तो फिर वो भी बोल दो कि अरे नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ बताना, तो नेक्स्ट टाइम आऊंगा ऑफिस में. चलो ठीक है. एनीबडी? यस सर. Good morning, sir. My name is Anil Ghelani, and thank you for this insightful session. I would like to ask you something related to fixed income sector, since you are already working in that sector. So, can you give us some highlight about that? Since most of us do, trading or invest in equity, but we don't know much about fixed income. So, can you talk about it? Sure. So, have you read this book from Ben Graham called The Intelligent Investor? Ben Graham सबने सुना रहेगा ना. इट्स अ टेक्स्ट बुक. 1950s में अंकल थे, लिख के गए थे बुक, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर. एनीबडी? सो इट्स अ बाइबल फॉर इक्विटी इन्वेस्टिंग. नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, अभी पढ़ लेना बाद में कभी. इन दैट बुक विच इज मास्टर फॉर इक्विटी इन्वेस्टिंग, वैल्यू इन्वेस्टिंग, स्टॉक स्पेसिफिक, he has used the word debt, credit around 500 times. So I feel to be a good equity analyst, you need to be a good credit analyst also. Fixed income is very extremely complex matter, and when you are investing in fixed income security, it is also very difficult because you are lending to somebody, you are putting your capital, that entire capital can be at risk. Whereas in equity, if at all a mark-to-market movement can be your risk and you can sell it at any point of time and exit. One important thing to keep in mind in fixed income is to be able to analyze the ability and willingness of the borrower to repay your money.
If you're buying bond of some XYZ company, you need to understand the balance sheet of that company, whether that company will have the ability after 3 years, 5 years when your money is getting due to repay you, and the willingness. As long as you are able to get a grip on that, you can be successful. Fixed income analyst focuses more on the balance sheet of a company. Equity analyst focus more on a P&L of a company. नेक्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट क्या आने वाला है, एक साल के बाद क्या अर्निंग्स होगा, P/E रेशियो देख रहा हूँ मैं. क्रेडिट एनालिसिस सिंग बैलेंस शीट, आज मैंने 100 करोड़ डाला है तो पैसा आएगा कि नहीं वापस, प्रोजेक्ट कैसे चलने वाला है, कैश फ्लो कैसे आने वाला है. ऑफ कोर्स बोथ लुक एट बोथ, बट मोर फोकस इज दिस वे. So very short answer, but I'm just in a broad context trying to say that learn more about credit. अभी नीचे चले गए अपन, सपोज ये अपने फिस्कस वाले 2-3 कमेटी मेंबर आ गए आपके पास कि भाई अच्छा क्वेश्चन पूछा, थोड़ा आपसे हेल्प करा दो, अभी आप बहुत इन्वेस्ट करो ट्रेडिंग वेडिंग में, इक्विटी में पैसा वैसा कमा रहे हो, 1 लाख रुपए दे दो मुझे. क्यों? दूसरा एक सेशन रखना है नेक्स्ट मंथ में, फंड्स फ्लो नहीं है, तो आप क्या करोगे? दोगे कि नहीं दोगे? आपको बोले इंटरेस्ट दूंगा मैं 20% इंटरेस्ट, 1 लाख दो, 1,20,000 आपको मिलेगा 1 महीने बाद. लुक्रेटिव लगता है. यू विल एनालाइज एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू रीपे. फिस्कस है, बड़ा प्लेटफॉर्म है, स्पॉन्सरशिप मिलती है सब लोगों से, दे देगा. मेरे फ्रेंड्स है, आपने दे दिया 1 लाख रुपये, आपको मिल जाएगा वापस पैसा. नीचे जा रहा हूँ मैं, मिला आपको, भाई 1 लाख दो ना बॉस. अरे यार आपको कभी देखा नहीं है, तो फर्स्ट टाइम मिले हो, शायद दो भी दो, चलो, बट मुझे पता नहीं कुछ एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू पे कैसे होगा. नहीं सॉरी सर मेरे पास नहीं है, नहीं देता हूँ. तेरे को फिस्कस वाले ने 20% दिया ना, मैं तेरे को 30% देता हूँ बॉस. 1 लाख गिव मी, आई गिव 1,30,000. कभी सुना है ऐसा डील? कभी होता है ना, बहुत बार होता है ना सर. आई एम गिविंग हायर इंटरेस्ट रेट, गिव मी योर मनी. Fixed income investment always focus on the credit worthiness and the ability and willingness to pay and the balance sheet strength and the cash flow. If you cannot get a comfort on that, don't lend. That is the basic concept of investing in fixed income. Okay. So basically for fixed income, we should look for balance sheet and cash flow, and generally for equity, we look for P&L. Exactly. Thank you, dear. Okay, if anything else, but otherwise, yes, sir. Good morning, sir. Sumit Deshpande here. Thank you so much for engaging with the batch. And I must applaud you that it is one of the rare times that I've sat in a session where finance has made this, light-hearted and fun, and there is enough knowledge. My question was, when we talk about different asset classes, right? We talked about equity, we talked about debt, and we talked about commodity as well. When we look at gold, for example, because we discussed the example of gold, the issue that I feel with the advent of more and more influencers, there is information discrepancy. That is, if you compare rolling returns of gold and see how it is structured, it does become a lot difficult to consider it seriously as an investment opportunity. So what is your advice in terms of understanding as future managers of, let's say, portfolio, to decide one, authenticity of information that you're getting, understanding the risk exposure, and as well as understanding what strategies we can have in order to prevent any sort of long-term damages that we cannot recover. So what is your advice in terms of deciding your portfolio allocation as well as having mechanisms in place to safeguard our investments? Sure. See, I think how to design your portfolio is a very challenging thing, and it's each individual's risk and return objective and the time when you want that money back. How to analyze that is very simple. Yes, rolling return is important. Yes, historical returns is important. But most important is, in my view, downside risk. There have been periods when gold also has had huge downside. There have been periods where gold has not done anything and remained stagnant in the portfolio for a long time. So one needs to be aware of that. So if you are able to create databases of long history, I'm sure in the college you must be having access to Bloomberg or Reuters basically. That will help you to create some model of historical interplay between different asset classes and then have a proper
suitable mix in your portfolio. Not just because, okay, I said कि right now interest rate are going to reduce, so gold will go up, तो gold खरीद लो. ऐसे नहीं, कितना % लो सर? So that is a critical thing. Based on this interplay in the past, you can get a judgment. Great. Anything else? Anybody? Any questions? But otherwise, I also have a hard stop, and I know you have a next session.